morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study Sanskrit chapter number 5 Hasti Hasti Hasti, that means elephant elephant elephant. In our previous video we learned this poem. Today we are going to write down this poem's translation. So open your book and write down the translation. Now, first of all, put down the heading chapter number 5 or lesson number 5. Now, chapter's name Hasti Hasti Hasti. Hasti Hasti Hasti. That means elephant elephant elephant. Elephant elephant elephant. Now, put down the heading translation. Translation. Write down into paragraphs. Hasti 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 Divya Devi Srishti. Elephant elephant elephant. Elephant elephant elephant. It is a unique unique and divine divine creation. 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 Elephant elephant elephant. It is a unique and divine creation. Full stop. Now next paragraph. कदली सद्यसी सुंदा स्तंभ समाना पादा सुरपाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो. ये दोनों एक ही पैराग्राफ में लिखने हैं, ठीक है. द एलिफेंट्स ट्रंक इज लाइक बनाना. ट्रंक TRUNK ट्रंक इज लाइक अ बनाना. Is like a banana. Comma. Legs are like pillars. Legs are like pillars. 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 Comma. Ears are winnowing. WINNOWING. Winnowing trough. 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 Shaped. SHAPED. Shaped and two tusks. That means teeth. Two tusks are white and long. Tusks का spelling TUSKS. Two tusks are white and long. Full stop. Now third paragraph. उदरम भाण्डाकारम उन्नत बृहत् शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम. Stomach STOMACH. Stomach is pot shaped, comma, body is high and huge. Body is high and huge. Full stop. Tail is small and insignificant. INSIGNIFICANT. Full stop. Oh wow. How unique.
exclamatory mark. How unique, exclamatory mark. Now next paragraph. पर्वत सद्य से गात्रे ससर सनीप नेत्रे कथमति बलवान एषः अंकुशमात्राद भीतः. टू मस्टर्ड MUSTARD mustard seed like SEED like eyes in its mountain 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 like huge body comma how scared SCARED this extremely strong elephant is only with a sharp sharp comma pointed 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 stick full stop. Written by Janardhan Hegde. After complete this poem, we will learn about the Pundravartan 1. Question number 1. Read the following sentence with correct pronunciation. ये यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमें प्रोनाउंस करना है. जैसे कि ससकः शयनं करोति आकाशः पतति सिंहः आगच्छति कुत्र पतति आकाशः सिंहभ्रातः धावतु आकाशः पतति आकाशः पतति. Question number 2. Write the following numbers in Sanskrit words. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उसको हमें संस्कृत में लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है. 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? We will learn about the counts, है ना? Yes, 6 को संस्कृत में कहते हैं shutter. You have to write down shutter in here like this. Next one is, yes, it's a 8. 8 को संस्कृत में कहते हैं अष्ट. You have to write down ashta like here. Now these 3 number you have to write in Sanskrit words your own ways. Okay, like this. Read question number 3. Read the following words expressing numbers. अब यहाँ पे नंबर एक्सप्रेस करना है. पहले हमने क्या किया था? संस्कृत में वर्ड्स लिखे थे. अब क्या करना है? हमें एक्सप्रेस नंबर करना है. फर्स्ट वन इज द्वे. द्वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? यस, द्वे मीन्स 2 and we have to write down 2 here like this. Clear everyone? And then Trini. Trini, that means, yes, Trini, that means 3. We have to write down
3 here। अब ये जो 3 हैं वर्ड्स वो आपको खुद लिखने हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन लेजिबल हैंड्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको कॉपी करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अपनी बुक में। थैंक यू।